So this is our new problem. Okay, so how we can do this? Yes. Can anybody tell me, all of you, do you have all this calculation, and calculate and give me the values of what is the vertical reaction at A and what is vertical reaction at B? Chalo, काम पे लगो. Because that is the part which we have already studied. I want the answers for vertical reaction at A and vertical reaction at B. Without that, I cannot start with the SFD drawing, right? Yes, who will give me? Let me call out some names. Okay. Mechanical A, Divyang Jadhav is there. Yes or no? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So Divyang Jadhav है कि नहीं है? Okay. Who's Mech A roll number 4, Dhruvin Sheth is also there. Give me the values of VA, VB. I hope that much you can do. उतना तो आना ही चाहिए ना? Okay? Yes or no? किया क्या किसी ने कैलकुलेट अभी तक? नहीं, सब भूल गए. So let's do. I don't have. Sir, The VB is vertical 11. VB is 11. Sir, 8 and B 11. VA is 10. VA is 10. 10 kilonewton and VB is 11. 11. 7. I hope these values are correct. Yes. Yes, sir. Now tell me what will happen if these values are incorrect. अगर तुमने incorrect values calculate किया, what will happen? इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना सर. सर वो जो हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल नहीं आएगा दोनों साइड्स पे. Yes, नहीं. शेयर फोर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा शेयर फोर्स का वेरिएशन ही रॉन्ग आएगा. The graph going to be wrong. Okay? और वो मैच नहीं होगा. लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज विल नॉट मैच विद योर राइट हैंड साइड वैल्यूज. मतलब अगर तुमने क्रॉस चेक किया लेफ्ट साइड सेक्शन एंड राइट हैंड साइड सेक्शन सॉल्व करके, दे आर नॉट गोइंग टू मैच. Okay, so that is very important to know this. Okay. Yeah. So next, let's go to the calculation. VA, VB we have calculated. Now, as you know, हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे? To draw this SFD BMD, I'll require this particular space. So मैं इसको ऐसे नीचे करके draw करके रखता हूँ. Okay. I'll require this also. Why I'm taking only the points which are given? Because वहाँ पे point, ये points पे क्या होने वाला है? My shear force variation is going to take place. ठीक है? So that is why I'm interested in this much. So first of all, I will draw the shear force variation at this location. Okay, this is A, C, D, E, and B point. Okay. So now, the very first one is shear force calculation. Now you all guys can help me out. At point A, how will I start with at point A?
you know that ki at point A there is a vertical load, so I'll require two values. I'll have two values of shear force, the first value and the second value. The first value क्या होता है हमेशा? First value क्या होता है? दो sections लेते हैं हम, right ना? 0 sir. First value तो 0 ही आने वाला है, but दिखा रहा हूँ मैं. ये एक ऐसा सेक्शन लूंगा, एक ऐसा सेक्शन लूंगा, राइट? फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन पे 0, सेकंड सेक्शन पे क्या आएगा? 10 अपवर्ड 10 है तो पॉजिटिव है 10, इसलिए 10 किलो न्यूटन. ठीक है. देन एट पॉइंट बी, सॉरी सी क्या आएगा एट पॉइंट सी? SF1 10, SF2 6. नाउ इट इज सिंपल ना. yes sir. SF1 तो सेम ही रहेगा बिकॉज जो कंटिन्यू हो रहा है 10 किलो न्यूटन जो पहले आया था, एंड SF2 कितना हो जाएगा? 6 किलो न्यूटन 6. 10 माइनस ऊपर का 4, इट इज गोइंग टू बी 6 किलो न्यूटन. minus 4. ठीक है. हाउ आई हैव रिटन फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, मैंने ऐसे सी पे दो सेक्शंस लिए, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन जब इधर बात किया तो एक ही फोर्स था 10, जब सेकंड की बात किया तो 10 माइनस 4 हो गया. ठीक है. नाउ एट पॉइंट डी 6 and minus 4 shear force 1 is again going to be remaining same, 6 जो पहले आया था, और ये सेकंड वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा. that 6 minus 10, it is going to be minus 4 किलो न्यूटन. then at point E -4 and -11. shear force 1 value is minus 4 जो वैसे -4 कंटिन्यू रहेगा, and but the और second value is -11. going to change. -11 minus 4 minus minus 11. minus 7 ना, हाँ, minus 7 equal to minus 11 किलो न्यूटन. and what is going to be at the point at point B? -11 and 0. So I'm writing here at point B the shear force 1 value is minus 11 kilo Newton, and the final value is going to be 0, of course 0. Now can you plot it? So point A पे पहला 0 value आया, उसके बाद 10 ना, उसके बाद 10 value. Let's say this is 10. Yes sir. Then yes Sania, continue asking. सर SF2 पॉइंट ए का 10 कैसे आया? See here, point 2 मतलब ये सेक्शन है, हाँ उसके लेफ्ट साइड पे क्या क्या है? ये फोर्स आया ना अभी, हाँ हाँ ओके वैल्यू कितना है? 10 है ना, इसलिए 10. हाँ. ओके सी पे कितना है? देखो 0 मैंने प्लॉट किया, दिस इज 0, 10 प्लॉट किया, उसके बाद सी पे वापस से 10 है तो उसको वैसे ही लगता हूँ. सी पे और एक वैल्यू है -4, सॉरी 6, so this is my 6 value, this is 6 किलो न्यूटन. then D पे 6 कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद it is going to -4, so that I'm writing as -4. then again -4 कंटिन्यू हो रहा है, and it is still going down up to -11. then -11 कंटिन्यू हो रहा है, and then again coming back to 0. now this is very simple to join ना. ये सीधा वर्टिकल अपवर्ड, ये इसके बीच में कोई लोड नहीं है. हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉप हो गया बिकॉज वर्टिकल डाउनवर्ड लोड था, वापस से कुछ नहीं है. हॉरिजॉन्टल वापस ड्रॉप हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड लोड के वजह से -4 पे आया, वापस से कुछ नहीं है, -4 पे कंटिन्यू, देन अगेन ड्रॉप हुआ, देन कंटिन्यू, अभी यहाँ पे ऊपर जाएगा बिकॉज वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है. अंडरस्टूड? यस और नो? अंडरस्टूड दश? हाउ टू ड्रॉ SFD? yes sir. Okay, good. So now let us go for bending moment. Okay, so let me draw this line for bending moment A. Okay. So point A, bending moment calculation. Huh? Now, is there any point load? Is there any moment on the beam? No. So therefore, I don't require any multiple sections for bending moment. ठीक है, तो मैं एक सेक्शन से लूंगा. I will directly write down bending moment at point A. At point A तो 0 आता है, सबको पता है कि सेक्शन A पे अगर लिया उसके लेफ्ट में 0 रहेगा. So this way 0. Then at point bending moment at point C. Tell me about C. अगर C पे कोई सेक्शन लेता हूं मैं, दोनों में से कोई भी एक सेक्शन लो, उसके लेफ्ट साइड में क्या है? ओनली वन फोर्स 10, एंड उसका डिस्टेंस कितना है? 1.5.
So it is 15 kilonewton meter, right? Yes. Next, bending moment at point D. Tell me for D. अभी ये 15 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये शेयर फोर्स की तरह नहीं होता, डिस्टेंस चेंज होते जाता है, तो ये 15 कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला. डी के लिए तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा. डी के लिए अगर तुमने देखा, डी के लेफ्ट में दो फोर्सेस है, एक है ये VA और एक है ये 4 वाला. VA जो है 10 किलो 30 न्यूटन, किलो उसका न्यूटन डिस्टेंस डी मीटर। से कितना है, उसका डिस्टेंस 2.5 प्लस 1.5 बिकम्स 4. एंड जो दूसरा है वो माइनस में है, माइनस 4 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 2.5, कितना हो जाएगा ये 10 40 माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। 30 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है. नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E 10 into 6 minus 4 into 4.5. 10 इंटू, अभी वापस से लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर लिखना है तो 10 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4.5. अरे अंडरस्टैंडिंग, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट? 10 इंटू 6 क्यों? बिकॉज 10 का E से डिस्टेंस कितना है 6 है. 4 इंटू 4.5 क्यों? बिकॉज ये जो 4 किलो न्यूटन है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 2.5 प्लस 2 विच इज 4.5. ओके. एंड माइनस 10 इंटू अगेन 2, ये वाला जो 10 किलो न्यूटन है, दिस 10 किलो न्यूटन, तो कितना हो जाएगा? 22. हाँ कितना? 22. 22 आता है. 22 किलो न्यूटन मीटर. देखो यही सेम चीज मैं राइट हैंड साइड से भी लिख सकता था. कैसे? तो दिखाता हूँ मैं. बिकॉज ई के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो मल्टीपल फोर्सेस है, पर राइट पे एक ही है. तो राइट पे अगर मैं लिखता तो कितना है वो 11, राइट? उसका डिस्टेंस कितना 2, बट राइट साइड पे उल्टा पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ढकेल रहा है तो पॉजिटिव, और एल्स अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है, इसलिए वो 11 इंटू 2 पॉजिटिव आएगा. सो आइदर यू कैन राइट 11 इंटू 2 एज 22, और ये फिर पूरा ये सॉल्व करके भी 22 आएगा. That is why if you know the both side conventions, it is for you, you can write down always a minimum equation. तुम कम से कम वाला इक्वेशन लिख सकते हो. Okay, so that is why, but it is 22. Then bending moment at last point क्या आने वाला है? B point पे तो 0 आने वाला है, because उसके राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा. So let's plot now. प्लॉट करने के लिए अभी कैसे करेंगे? A पे 0 वैल्यू है, C पे वैल्यू कितना आया 15 किलो न्यूटन, D पे कितना आया 30 किलो न्यूटन, E पे कितना आया 22, मतलब समवेयर हियर, एंड B पे कितना होगा 0. नाउ मैंने बताया था कि SFD में जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो BMD में इंक्लाइंड होता है. तो ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, इंक्लाइन लाइन ज्वाइन करोगे तो ये ज्वाइन किया, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, इंक्लाइन लाइन ज्वाइन करो, ये ज्वाइन किया, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स है, इंक्लाइन लाइन ज्वाइन, एंड दिस इज आल्सो इंक्लाइन लाइन. अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड द BMD, हाउ द BMD varies? Now can you tell me where the bending moment is maximum? At D point. Point D. हाँ, एंड D पॉइंट में shear force क्या है? -4 kilo. 6. माइनस कितना? 6 to -4 6 ना? to -4. 6 to -4. हाँ, 6 to -4 of course. Okay, but does it have 0 value as well? Yes sir, while it Yes, is तो sir. 0 ना, मतलब ग्राफ में 0 भी दिखा रहा है कि D पे 0 भी वैल्यू हो सकता है ना. मिनिमम 6 है, मिनिमम -4 है, मैक्सिमम 6 है, और 0 भी वैल्यूज है. ठीक है. तो बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वेयर द shear force diagram changes its sign. See here, पॉइंट डी पे बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया, बराबर. पहले वो पॉजिटिव था, अचानक से नेगेटिव हो गया, बराबर ना. पॉइंट डी पे ऐसा हुआ है कि वो साइन चेंज कर रहा है. पॉइंट बी पे और पॉइंट ए पे नहीं हो रहा है. पॉइंट ए पे वो एक तो पॉजिटिव है, पॉइंट बी पे वो नेगेटिव है, बट वो डी पे क्या हो रहा है, साइन चेंज कर रहा है. तो जहाँ पे वो साइन चेंज करेगा वहाँ वही पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है. So that is an important point where we should find out the bending moment, and that bending moment will be maximum. Your beam, जो भी तुम्हारा मटेरियल है, वो it should be satisfying this particular bending moment of 30 किलो न्यूटन मीटर, and if it satisfies at D point, बाकी कोई भी पॉइंट पे बीम फेल होने का चांसेस कम होता है. Okay, it is having maximum chances of failure at point D, and that is why we should satisfy the point D का value, not for all the values. Okay, so डिजाइन में हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे बेंडिंग मोमेंट का? 30 वाला, बाकी कोई नहीं लेंगे, बिकॉज अगर वो उधर सेफ है तो बाकी सब जगह पे सेफ ही होगा.
Are you understanding my point? So this is the statement, is very, very important. The bending moment is maximum where the shear force diagram changes its sign. Okay? There can be multiple points also. Multiple points हो सकते हैं. Like point D, sometimes it may happen that कि point E पे भी sign change होके positive हो रहा है shear force. So at that point, now there is a choice कि point D और point E में से सबसे ज़्यादा bending moment कहाँ पे आ रहा है. You have to calculate and then you have to decide कि कौन सा maximum. Okay, but by looking at the diagram, we can say that कि point D पे maximum हो सकता है और एक अगर point होता तो वहाँ पे भी maximum हो सकता है. We have to check it. Have you understood this? Any doubt? Yes or no? Yes. Shall we go ahead? Yes, sir. एक क्वेश्चन था सर कि आपने बोला कि 6 to -4 ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है वैल्यूज. सर वैसे तो -11 और 4 में भी हो रहा है. ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है क्या? ओके. नहीं ना. आई हैव रिटन नॉट ओनली ड्रास्टिक चेंजेस, आई हैव रिटन साइन चेंज. साइन चेंज हो रहा है तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक वायर लिया, वो तोड़ने बोला तुम्हें, तो टूटता है क्या? वो ऐसे खींच के नहीं टूटेगा, बट तुम ऐसा बेंड ऊपर नीचे कर सकते हो, टूट जाएगा. ऊपर नीचे से क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी. दैट मेक्स मटेरियल इवन मोर वीकर बियॉन्ड इट्स स्ट्रेंथ. मतलब उसके स्ट्रेंथ के बिलो ही वो टूटेगा. दैट इज व्हाई वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि शियर फोर्स का वैल्यू साइन में कहाँ पे चेंज हो रहा है. That is very important for us because it creates different type of stresses, exactly negative positive stresses, and because of that the material will be weaker at that section, which may fail at that section. That is why it is important to know where the section is going from positive to negative and where is the bending moment is there. And we have calculated. So देखो उसका result क्या है? bending moment वहाँ पे maximum आया कि उधर ही वही सबसे weakest point है. Okay? Understood this? So now let's go for the next case. We will solve one more problem based on the same way. Now again we need to draw SFD BMD. This time the diagram is not given. Now let us take, अभी हमने simply supported beam देखा दोनों side पे. Now let us take a cantilever beam. What we are taking? A cantilever beam. All of you know what is a cantilever beam? क्या होता है cantilever beam? Freely supported at one end. Yeah. So this is point A. This is point B, and we have a cantilever beam which is having a point load at its end W, and the length of the span is L. And you have to draw the shear force and bending moment diagram. हमें फाइंड करना है कि shear force का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है और बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है. Okay, now tell me, how will you find out the support reaction for this cantilever? कितना support reactions आएगा यहाँ पे? So let us find out first the support reactions. In your solution, always the support reactions will also be there, because अभी तो तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ vertically, but in problem solving in exam, you need to first of all figure out what are the support reactions, right? उसके लिए अभी support reactions अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो सबसे पहला support reaction क्या आएगा? Vertically upward reaction VA, and there is a moment MA, right ना? मोमेंट भी आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आता है, बट हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू यहाँ पे 0 आने वाला है. व्हाई? देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड ना, तो वैसे भी लेके कुछ फायदा नहीं है. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का फोर्स 0 आने वाला है. दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट एट. अदरवाइज एट फिक्स सपोर्ट देयर विल बी 3 रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट, बट आई एम ओनली टेकिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, सॉरी मोमेंट एंड वर्टिकल, बिकॉज़ द हॉरिजॉन्टल इज गोइंग टू बी 0. देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड, सो देयर इज HA का वैल्यू भी 0 आएगा. सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट, कैसे करेंगे अभी मोमेंट्स? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट ए. ठीक है, तो क्या है मोमेंट? एक तो खुद ही एक मोमेंट है वहां पे. अभी इसके लिए ये जो मैं सपोर्ट रिएक्शन सॉल्व करता हूँ, इसके लिए जो साइन कन्वेंशन तुम्हें अच्छा लगता है वो ले सकते हो. यू कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जो तुम्हें चाहिए वो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हियर. ओनली द बेंडिंग मोमेंट एंड shear force diagram हैज गॉट देयर सर्टेन साइन कन्वेंशन व्हिच इज टू बी यूज्ड इन दैट वे ओनली.
there we cannot have our own sign convention. Okay, so जहाँ पे अभी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसके लिए ma को मैंने पॉजिटिव बोला, देन va का मोमेंट तो वैसे भी जीरो आने वाला एट पॉइंट ए, एंड जो w है उसका मोमेंट आएगा जो कि नेगेटिव रहेगा माइनस w इंटू लेंथ l. तो व्हाट इज माय ma मोमेंट a का वैल्यू कितना आएगा? माय मोमेंट a का वैल्यू आएगा ओनली wl एंड दैट इज इन किलो न्यूटन. सो मैं मोमेंट a का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज wl. सो आई नाउ नो द मोमेंट. नाउ व्हाट एल्स आई वांट टू कैलकुलेट is the summation of forces in y direction. What is the summation of forces in y direction? एक तो va upward है माइनस एक w downward है is equal to 0 and you will get va is equal to w. Got this? दो वैल्यूज मिला मुझे, सपोर्ट रिएक्शन तो मिल गया. va का वैल्यू कितना है? तो w है. नाउ सो नेक्स्ट अभी कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस गो फॉर शियर फोर्स कैलकुलेशन. ओके, तो शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? दो सेक्शंस कहाँ पे लेंगे हम लोग? जहाँ पे लोड है. तो अभी यहाँ पे ए पे लोड है, तो लेट अस टेक टू सेक्शंस हियर एंड बी पे दो सेक्शन, राइट? ये फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन ए पे, ये फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन बी पे. तो अभी शियर फोर्स मैं कर रहा हूँ एट पॉइंट ए. तो शियर फोर्स एट 1, सेक्शन 1 तो 0 आता है, सबको पता है. सेक्शन 2, सेक्शन 2 अगर मैंने बात किया तो उसमें ये ऐड हो जाता है, राइट? तो वो तो वर्टिकली अपवर्ड है W, इसलिए पॉजिटिव आया. नाउ एट पॉइंट बी, राइट? एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी क्या होगा? shear force at section 1 it is going to be W only and shear force at section 2 is simply 0 आ जाएगा. Have you understood this? समझा सबको? So can I plot the shear force? Yes, sir. तो एट पॉइंट ए पहला वैल्यू 0 था, देन वैल्यू था W, देन B पे वापस से W था एंड देन वैल्यू था 0. So my shear force diagram will be simply a rectangle like this, right? This is my SFD. This was very simple. Now what about bending moment? Bending moment calculation. Yeah, अभी bending moment में देखो, do we have any moment at the on the beam? Yes, we have a moment at point A, so we need to take two sections at A. So I need to write down this is way. At point A, I'll be taking bending moment at section 1 and I'll be taking bending moment at section 2. मेरा कन्वेंशन क्या है? तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करता हूँ तो ये वाला मोमेंट पॉजिटिव होता है, ये मेरा कन्वेंशन है. ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट 1 तो 0 आएगा बिकॉज जब मैं ये सेक्शन लेता हूँ आई विल नॉट कंसीडर दिस मोमेंट एट ए, बट मैं दूसरा सेक्शन लेता हूँ तो वो मोमेंट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा विच इज मोमेंट एट ए, एंड वो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आई नीड टू राइट डाउन नेगेटिव बिकॉज माई दिस इज पॉजिटिव एट द लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? व्हाई नेगेटिव? बिकॉज देखो मेरा मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं काम करता हूँ, मैं दो सेक्शन क्यों लेता हूँ? एक बार वो मोमेंट को लेने के लिए, एक बार नहीं लेने के लिए. पहला सेक्शन में मैंने मोमेंट को छोड़ दिया, आंसर 0 लिखा. लेकिन सेकंड सेक्शन में मोमेंट को कंसीडर करूंगा. वैसे भी VA जो फोर्स है उसका तो मोमेंट 0 आता है, दैट इज फॉर श्योर. ओनली द मोमेंट MA विच इज देयर, WL जिसका वैल्यू है, बट वो नेगेटिव है. क्यों? बिकॉज वो एंटी क्लॉकवाइज है, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन आई शुड हैव क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव फॉर बेंडिंग मोमेंट. So therefore I am taking minus MA and that is minus WL as my value, right? Minus WL as my value. Then I will go for at point B. Now at point B I don't have to take two sections because there is no moment. So simply I will write it is the end point. So bending moment is going to be 0. Even if you calculate, you are going to get it 0. क्योंकि राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में देखा तो एक तो W into L है और वो दूसरा जो फोर्स है उसका वैल्यू लेना पड़ेगा W. VA का वैल्यू, VA का W वैल्यू है और उसका मोमेंट B पे आएगा W into L. तो minus W into L plus W into L, you will get the 0 value. So directly you can write down 0 and now you can plot this.
at point A. What is the value? First value is 0. The next value is minus WL. And then at B, it is simply 0. तो यहाँ पे ये drastically down आया. Bending moment में vertical line कब आता है? Whenever there is a moment at the loading diagram. Loading diagram में ऊपर moment रहेगा तो bending moment में vertical line आएगा. ठीक है, जैसे shear force में आता है जब shear force रहता है. Okay, then यहाँ पे जब inclined line है तो इसका representation यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sorry, horizontal line है तो इसका representation यहाँ पे inclined line हो जाएगा. ठीक है? So this is the variation. So this is my BMD for cantilever beam, a simply cantilever beam which is having a load at the its free end. Are you understanding it? Now ये bending moment negative है, ठीक है? तो हमें पता है कि कैंटिलीवर पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका कौन सा होता है? फिक्स पॉइंट, जहाँ पे उसके पास ज्यादा मोमेंट आएगा एंड वहीं पे हमें इसको बैलेंस करना है. तो मोमेंट का वैल्यू कितना है? इट इज WL. योर मटेरियल शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट मच WL मोमेंट. And what is the shear force? It is W. Understood this? Have you understood this particular part? Sir, Yes. sir, MA anti-clockwise क्यों लिया? Shear. कौन सा? MA जब हमने assume किया तभी Assume वो किया anti. तो मेरा कन्वेंशन था पॉजिटिव ने. अगर नेगेटिव assume किया होता तो वैसे लिखा. तो अगर वो वैसा होता तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव आता ना. अगर मैंने assume करते वक्त ये वाला assume किया होता तो मेरा आंसर ही नेगेटिव आता माइनस WL. बराबर? हाँ. फर्क नहीं पड़ता. यू गोइंग टू गेट द सेम डायग्राम्स व्हाटएवर वे यू डू. Thank you, sir. ओके. किसी का आवाज आ रहा है ऊपर. Okay, good. So I hope you understood this. Now let us go with some important part now. One important question we can do. We have acha. Shall we do it now or afternoon session? Have you understood this everything? Let us have a 10-minute recap what we have done, and slight difficult problems will start in the afternoon session. Again, today also I would like to start at 2 o'clock because 2 to 4 we can wrap up the things and we can do this, right? Is it fine? Is there anyone having any issue with that? No. No, right? sir. Yeah, good. So let us go for now. No, sir. The recap what we have done. So let's quick recap. So we started with shear force, understanding what is beam. So we know now we know that horizontal is known as beam, then vertical is known as column. Beam के ऊपर at different cross sections the shear force value is different. So why don't we plot it? And that plotting we call it as SFD. And similarly with the BMD, we have different values of BMD at different sections. Why don't we plot them as well? And that is we call as bending moment. Right ना? तो ये हमें पता चल गया. Next क्या है? कि उसका sign convention. Sign convention we understood. If you are calculating shear force, if you are working on the left hand side section, you take vertically upward positive. Right hand side, it is the vice versa, downward positive. Bending moment, if you are working on the left side of the section, clockwise positive, and if you are working on the right hand side section, anti-clockwise positive. Okay. So SFD BMD we understood what is that, and then we try to draw SFD BMD for different cases. The very first case we take is for a simple beam which is having a simply supported beam having a central load W. So we could figure out immediately कि उसका ये क्या आएगा, this one bend VA reactions at support reactions, that orally we could figure out. Therefore support reactions का part we have not written here. Then support reactions once you know, then we can find out the shear force. What are the key points to remember here is shear force diagram will have two values wherever there is a point load acting. Wherever there is a point load acting. Okay. And bending moment diagram will have two values wherever there is a moment acting. Okay, these are the two key points which you should remember. If you want, I will write down here. Okay, I will write down the note points. Okay, SFD has two values at a point where point load is acting. Okay, and second is BMD has
two values at a point where couple or moment is acting. Getting it? These are the important points we should remember. Okay. Now next. So after that we plotted the SFD BMD for this particular graph. Then it was SFD BMD for with extra forces. So we could also calculate this one. Here we understood that wherever the SFD changes its sign, this is the important note which we made here. SFD, whenever it changes its sign, the point at that point the bending moment is going to be maximum, and this is the point of interest for designers, because they should this is the weakest point in the span of the beam, where it should be supported wisely so that it should not break in the loading time. Okay, so that is what we understood here. Then the third one which we solved is for the SFD and BMD for a cantilever beam. I mean, cantilever, we know that at the fixed end there going to be a moment. So therefore, how the moment, how we deal with the moment whenever we calculate BMD calculation, that we have seen we take again two sections as that of in SFD, but at one section we do not consider the moment, at the other section we consider the moment, and we draw the two values. Okay, the variation, everything rest of the things will remain same, and using same kind of concept we need to draw the SFD BMD for more complex problems. Right now we were having only point loads acting on the beams. We now, after that, we will be going for UDLs first, then UVLs, how to deal with the points and how to identify where the bending moment is going to be maximum, how to identify a point where the bending moment can be zero as well. So that point we need to locate. So how to locate those points, how to calculate for maximum and minimum bending moments, and how to calculate for maximum minimum shear force. So that is what the next part which we need to go in the afternoon session. Okay. So